Let's have a quick take on this short chapter of organic chemistry called as polymers. So basically, what are polymers? Polymers are nothing but long chain molecules, long chain macromolecules, which are having very high molecular weight and are formed by repeating units called as monomers. So as the name suggests, like you know that poly means many and mer means unit. So when many units are joined with each other, now I want you to imagine a garland. Now in a garland, we are having what? What is the monomer? There are flowers. When these flowers are connected with each other, repeated units of flowers are connected with each other, they form a garland. That garland is the polymer. Similarly, here polymers are having single units as monomers. Mono obviously meaning single, and mer, as I've told you, it is units. So single units are monomers. They are repeating itself. Like flowers are repeating in a garland. Similarly, monomers are repeating in a polymer. So that is what is the concept of polymer. Let us see which are the different polymers around us. Okay, now in your own body, you are having a lot of polymers. Like proteins are there in your body. They are long chain polymers of amino acids. Similarly, you are having polysaccharides in your body like starch, or you're eating starch. That is starch, cellulose. All these are long chain polymers of glucose, right? Then you are having keratin. That's again a protein. Okay, that is again a polymer. So there are many polymers. Now these were the natural polymers which are present in our body. Somewhere we have seen that in biomolecules. Now in this chapter, we are going to see not only the polymers which are present in our body, but also which are present outside. And if you look around yourself, not within yourself, around yourself, you will also find many polymers. Like plastic is a polymer, polyethene, many ethene molecules connected with each other. So ethene becomes the monomer, and many ethenes when connected with each other, that becomes a polyethene, right? Then we can also see polyvinyl chloride. Like this stylus or pen is made up of what? Polyvinyl chloride. Okay, polyvinyl chloride polymer is also a polymer of vinyl chloride. Then you can see nylon, rubber, all these are polymers. Okay, so now because polymers, there are many polymers, we need to classify them, and there are different bases of classification. So the first basis of classification is on the basis of source. I would suggest you write along with me on the basis of source. So based on source, polymers can be classified into natural polymers. Like natural polymers are those which are obtained from plants and animals. Like cotton is a natural polymer, wool is a natural polymer, cotton obtained from plant, wool and silk obtained from animals. Then semi-synthetic and synthetic polymer. Now, what are synthetic polymers? Synthetic polymers are those which are prepared in the lab. Okay, synthetic polymers are those which are prepared in the lab. For example, nylon, polyethylene, all these are the synthetically, that means they are nowhere involved with natural, and these are the problem. This is the problem actually. Synthetic polymers are not degrading, and that's the reason why, because of these synthetic polymers, we have harmed the environment like anything. Okay, it is said that if we continue to produce plastic with the rate which we are producing, our seas will be having more plastic than animals in it. So already there is a lot of plastic and lot of non-biodegradable polymers inside the sea and on the land as well. Okay, so we need to switch from synthetic polymers to or you can say synthetic biodegradable polymers. That's also possible to make. We're going to talk on these terms, these lines a little later. Then silk is a natural polymer. As we have said, silk is a natural polymer, but the problem with silk is the thread of silk is having a very low tensile strength. It will break very easily. So what we do is we derivatize silk. Okay, in the lab we take silk from natural polymer, we take silk and we derivatize it in lab. We attach cuprammonium groups to it, and when we attach cuprammonium groups to it, it becomes cuprammonium silk, which is like a mixture of natural and synthetic. That's why it is called as semi-synthetic. It increases the tensile strength. By the way, artificial silk is called as rayon. Rayon is the artificial silk, synthetic silk, but the semi-synthetic variety is called as the cuprammonium silk. So this was classification of polymers based on the different sources. Now we have another classification on the basis of IMFOA, intermolecular forces of attraction, and based on this we are having different polymers which like we can call them as elastomers or elastic polymers. Then we are also having
fibers, then we are having that bakelite. Bakelite is coming under thermosetting and thermoplastic. Let me explain this to you. Now, when I'm talking about elastic polymers, first of all, we should understand the meaning of the term elasticity in terms of physics, right? So, say for example, do you have an eraser? Yeah, here is an eraser. Okay, so like this eraser, we can call that it is elastic. Elastic is the phenomena elasticity which we are talking about. So, there is this eraser. We are applying stress to this eraser. You can see that we are applying stress to this eraser, and when we are applying stress, you can see that it is undergoing deformation. Deformation meaning its shape is changing. But the moment we release the deformation, the stress, the shearing stress or shearing strain, now you can see that the eraser is straight once again. Okay, it has regained its original position. So what is elasticity? Elasticity is whenever you apply shearing stress or shearing strain to a particular body, it deforms, but it again regains its original shape, just like a rubber band. You apply stress to it, okay, and release the stress. When you release the stress, it regains its original shape. So this phenomena is called as elasticity, and some polymers will come under elastic, like we are having rubber. Rubber is elastic. Just now we have seen the example of an eraser which was made up of rubber. Okay, then example of fibers, they're having a very strong tensile strength. Like example would be nylon 66. This will fall under fibers. Now elastic or elastomers are not having a very strong tensile strength, but fibers do have a very strong tensile strength. Then we'll come to thermoplastic, then we'll move on to thermosetting. Thermoplastic example would be polythene. Now what do you mean by thermoplastic? Like thermo meaning heat. Plastic does not mean that the substance is made up of plastic. Here plastic, by plastic I mean the phenomena of plasticity. Now what is the phenomena of plasticity? Think about it. What is the phenomena of plasticity? Say for example, yeah, what can we have over here? We can take this. Yeah, some tissue papers. Okay, now these are some tissue papers here. I did not find anything else, so I've taken the tissue papers. Now if I apply certain stress to it, okay, I'm applying stress to it, I'm applying shear, I'm applying strain. So what is happening? It is now, does it become flat once again? Yeah, is it becoming flat once again? Is it becoming flat like previously? No. So this is kind of a plastic substance. Plastic substance meaning, yeah, plastic substance meaning which deforms after applying temperature. Thermoplastic, after applying temperature only it will deform. If you want to understand plastic meaning, after applying shearing stress, shearing strain, it will deform, and once it deforms, the deformation is permanent. Okay, you cannot, it does not regain its original position. Like say for example, it's not a what do you say, Tollywood movie wherein the glass will break and again the glass will form again. No, that's not, that does not happen in real life. Once the glass is broken, it's broken. Okay, so that is kind of plastic. Okay, because once you apply that shearing stress or shearing strain, it changes its shape, it deforms, and once it has deformed, it cannot regain its original shape. Okay, so thermoplastic meaning it will now, which will be the most plastic substance? Just think about it. Which is the world's most plastic substance? Yes, world's most plastic substance, not plastic. World's most plastic substance would be something called as बिरला वॉल केयर पुट्टी. हैव यू हर्ड अबाउट दिस पुट्टी? और जिसको हिंदी या मराठी में लांबी कहते हैं. लांबी मतलब आपने पेंटर्स को देखा होगा कि हाँ पुट्टी पुट्टी बोलते हैं उसको. ठीक है, हिंदी में पुट्टी बोलते हैं, मराठी में लांबी बोलते हैं, इंग्लिश में भी पुट्टी बोलता है आई गेस, राइट. तो क्रैक्स रहते दीवार में, तो ऐसा पत्थरे पे लेते उसको, ऐसा व्हाइट कलर का पेस्ट जैसा रहता, दीवार की क्रैक में फिल कर देते. एक बार स्ट्रेस अप्लाई किया, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया, वो पेस्ट ने, पुट्टी ने दीवार के क्रैक का शेप फॉर्म कर लिया. अब वापस क्रैक में से बाहर आ रहा है क्या? नहीं. सो दैट इज काइंड ऑफ प्लास्टिसिटी, दैट इज प्लास्टिक. सो थर्मोप्लास्टिक मतलब जो हीट लगाने पर ही प्लास्टिक है. मतलब हीट लगाने के बाद में उसका टेम्परेचर, उसका शेप डिफॉर्म होगा, और डिफॉर्म होने के बाद में इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. कूल हो जाएगा, वही वैसे ही शेप में आ जाएगा. जैसे प्लास्टिक की कुर्सी है, बहुत देर बैठ के आपने उसको गर्म की, उतनी गर्म से वो उसकी शेप डिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन उसको भट्टी में डाल दिया, फर्नेस में डाल दिया, तो पूरा मेल्ट हो जाएगा. फिर वो प्लास्टिक से मेल्ट हुए प्लास्टिक से आप दूसरे मोल्ड में डाल के उससे बकेट बना सकते हैं, चप्पल बना सकते हैं, प्लास्टिक की चप्पल, कुछ भी बना सकते हैं. बट दैट इज आफ्टर हीटिंग. वंस इट कूल्स डाउन, यू कैन नॉट चेंज इट्स शेप.
एक बार कूल डाउन हो गया, बकेट बन गया, बकेट बस वही शेप रहेगा, इट विल रिमेन, इट विल नॉट डिफॉर्म अगेन अनलेस एंड अंटिल यू अप्लाई हीट। सो इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ऐसा होगा कि प्लास्टिक की बकेट बनाई फिर से चेयर बन गई, ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट इलास्टिक, इट इज प्लास्टिक एंड मोर ओवर इट इज थर्मोप्लास्टिक। ओके, देन थर्मोसेटिंग क्या होता है? थर्मोसेटिंग मतलब हीट करने के बाद में ये और ज्यादा सेट हो जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल तवा है, तवा, ठीक है, तवे पे वो आजकल नहीं आता नॉन स्टिक कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर पे कोटिंग रहता है, जैसे टेफ्लॉन है या और कोई कोटिंग, तो कोटिंग रहता है उसके ऊपर। अभी आप समझो वो कोटिंग इसके लिए रहता है कि आप डोसा वगैरह बना रहे हो, डोसा उसको चिपके ना, वो जो कोटिंग है ऑफकोर्स पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। सर कौन सा पॉलीमर है? बेकलाइट है, राइट, बेकलाइट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अभी आप समझो अगर ये हीट कर, अभी तवा है तो उसको हीट किए बिना जमेगा आपको नहीं, तवा है ऑफ कोर्स उसको हीट करना है, उसका पर्पस ही है हीट करके उसके ऊपर जो कुछ भी रखे वो कुक करना। तो तवे को आप हीट कर रहे हो, डोसा बना रहे हो, डोसा डाल दिया अच्छे से, अब जैसे डोसा निकालने की बारी है, आपने सब देखा है रास्ते में भी कोई डोसा बनाते रहते हैं ऐसे गाड़ी वाले, ठेले वाले, तो उसको जैसा डोसा निकालने की कोशिश करते हैं तो इसका कोटिंग, अगर ये थर्मोप्लास्टिक होता तो कोटिंग भी उसका निकल आता, मतलब जो तवे के ऊपर कोटिंग था ताकि वो चिपके ना, तो आपको कोटेड डोसा खाने को मिलता, विच वुड बी स्टुपिडिटी, बट वो ऐसा निकलता नहीं है क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर तवे के ऊपर लगाते ही नहीं है। तवे के ऊपर क्या लगाते हैं? थर्मो सेटिंग पॉलीमर, नॉन स्टिक कुकवेयर में थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। ये नॉन मेल्ट, ये हीट करने के बाद में मेल्ट नहीं होते, ये हीट करने के बाद में और सेट हो जाते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर, मतलब तवे को हीट किया और पॉलीमर चिपक गया, उसमें से निकला नहीं हुआ, मेल्ट नहीं हुआ, डिफॉर्म नहीं हुआ, राइट। ऐसे ही पॉलीमर्स आपको कोई भी स्विच दिखाई दे रहा है आपको? स्विच, हाँ, ये वाला स्विच का मटेरियल, ये अभी मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, बट इसका जो मटेरियल है ये आपको लगेगा कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं है, राइट। आपके घर पे स्विच बोर्ड होगा ना, स्विच बोर्ड, वो स्विच बोर्ड का मटेरियल किससे बना है? बेकलाइट से बना है। स्विच बोर्ड देखा ना, व्हाइट कलर का रहता है, उसमें बटन रहते हैं, स्विचेस रहते हैं, राइट, तो वो बेकलाइट से बना है। क्योंकि कभी समझो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर हो गई, तो वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो पूरा मेल्ट होकर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट वी आर यूजिंग थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ओवर देयर व्हिच इज बेकलाइट। So this is one basis of classification on the basis of intermolecular forces of attraction, on the basis of source हो गया। Then और एक है on the basis of formation, फॉर्मेशन के बेसिस पे पॉलीमर जो फॉर्म कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वी आर हैविंग एडिशन पॉलीमर्स। क्या है ये? एडिशन पॉलीमर्स। देन वी आर हैविंग एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन में ऑब्वियसली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किस मेथड से हम लोग दो तरीके से पॉलीमर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये भी क्लासिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे एक पॉलीमर्स जो एडिशन मेथड से प्रिपेयर किए गए हो और दूसरे पॉलीमर्स जो कंडेंसेशन मेथड से प्रिपेयर किए गए हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो, पॉलीइथीन, बट हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, सारे रिएक्शंस हम लोग देखने वाले, चैप्टर में रिएक्शंस भी ऑफ कोर्स, राइट। एंड कंडेंसेशन में आई कैन जस्ट राइट वन एग्जांपल, नाइलॉन 26। सर अभी पहले 66 लिखा था, हाँ 66 भी है, कंडेंसेशन ही है, 66 26 ओनली 6, ये अलग अलग ग्रेड्स है नायलॉन के, वो कैसे फॉर्म हुए, क्या हुआ है, वो सब मैं आपको डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स के अलावा वी कैन आल्सो सी द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ पॉलीमर, मतलब पॉलीमर का शेप कैसा है। तो पॉलीमर का शेप हो सकता है लीनियर, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, राइट। जैसे प्राइमरी प्रोटीन देखा था आपने, प्राइमरी प्रोटीन कैसा था? लीनियर था, बायोमोलिक्यूल्स में देखा था। सो लीनियर पॉलीमर विच इज पॉलीइथीन, वंस अगेन पॉलीइथीन इज अ लीनियर पॉलीमर। देन ब्रांच्ड पॉलीमर हो सकता है, ब्रांच्ड है अपना पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो मतलब बीच बीच में पॉलीमर तो होगा लेकिन बीच में ब्रांचिंग भी होगी, ठीक है। और उसके बाद में आएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक मतलब क्या सर? दो लीनियर पॉलीमर्स है, वो लीनियर पॉलीमर्स को हम लोग ने क्या कर दिया है? क्रॉस लिंक कर दिया है, क्रॉस लिंकिंग हो गया उसमें से, राइट। देयर इज क्रॉस लिंकिंग इन लीनियर पॉलीमर्स। ऐसा हमको वल्कनाइज्ड रबर में देखने को मिलता है, तो इसका एग्जांपल होगा वल्कनाइज्ड रबर। तो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, फॉर्मेशन, आईएमएफओए और शेप, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग क्या देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर्स। हम लोग पॉलीमर्स को एडिशन और कंडेंसेशन, जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, उसको डिटेल में पहले लिस्ट बनाएंगे एंड वैसे पॉलीमर्स हम लोग रिएक्शंस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे उन सारे पॉलीमर्स को जो आपके सिलेबस में है। ओके, इस वीडियो में बस हम लोग ने क्लासिफिकेशन कवर किया, जो मैंने बोला है कि आगे हम लोग हमको आने वाला है, दैट यू विल बी एबल टू सी इन द फॉलोइंग वीडियो।